Hello everyone and welcome back to my channel. I am Aarushi. This is our second video on this channel. So let's get started. First, draw a rough figure with your pencil. You can also follow me on my Instagram too. Now I am drawing some folds on my dress to give it a 3D look. नाउ आई एम ड्राइंग द लेग्स और लेग्स बनाने के टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी लेग्स हैं वो ना तो ज़्यादा मोटी हों ना ही ज़्यादा पतली हों, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप की होनी चाहिए. सो या नाउ माय पेंसिल वर्क इज़ डन एंड नाउ आई एम डूइंग इट्स आउटलाइनिंग. And now it's time to color the dress. Now make sure that there is not any coloring strokes or pencil color strokes on the dress. Now color the folds very carefully. You can also use grey color to give some light shadows, and at last use the white pencil to blend it all. Here I am using a crayon color for doing the skin. Now I am rubbing it with a cotton to give a light shade to my skin. It's time to give some shadows to my dress with a black pencil to give it a 3D look. After using a black pencil, here I am using a white pencil color to give some highlights on my dress.
Now to blend it, rub it all with a cotton nicely. Here I am using a brown pencil to give some shadows to my skin. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।